हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉल्ड IVD मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपका मेंटर अमर। आज हम जानेंगे वैसे वो कौन सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है विच आर एप्लीकेबल फॉर WHO PQ। So let's go deep into a lecture. Welcome back. So there are mainly 4 key international standards which have been followed and referenced by the WHO PQ. The first standard is ISO, International Organization for Standardization. This ISO, for example, ISO 9000, ISO 13485, ISO 14971 and many more, right? The second one is the GHTF, Global Harmonization Task Force, right? The third standard is the International Medical Device Regulator Forum. Fourth one, none and all, the favorite standard for the R&D and the QC person, which is the CLSI, Clinical and Laboratory Standard Institute. So friends, I am not going to talk about this 4 standard in detail, but मैंने क्या किया है, मैंने already इन standards के against मैंने अपने channels पे already video publish कर रखा है. I have published this video in a series of lectures which is named by the standard for the IVD products. मैं उसका लिंक मैं अपने इस चैनल के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा. प्लीज गो थ्रू दोस लिंक, क्लिक इट एंड गेट द इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स व्हिच आई हैव टोल्ड इन दिस लेक्चर, राइट? सो आई होप इफ यू एंजॉय माय लेक्चर, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब in your network as well. Bye bye.